Namaste, and welcome to this second session of day three. It's a very interesting topic, and that is will we ever have the real history of India? And we've got two very eminent panelists here. The third panelist, Mr. Sandeep Balakrishna, had an emergency, so he had to leave. And let me introduce Francois Gautier to you. And Francois Gautier is otherwise well known to all the Jaipur Dialogues people still. Uh, the latest that we can inform about him is that his book, An Entirely New History of India, will be released on Jaipur Dialogues today at 7:30 p.m. So, yes, otherwise also has written so much and also has this Holocaust Museum project in Pune. Tufail is also very well known to you. He is a frequent participant on Jaipur Dialogues discussion. So I will start right away with Francois. You've written this new book, this entirely new history of India, and otherwise also you've been writing off and on about it, and you've had long journalistic career as well. You think this kind of a writing that you have done, you think if we get these kind of books about, say 5 or 6 books of this kind every year, would that be sufficient, or do we need a different approach to create the real history of India? No, I can write as many books as I want, and in fact, I have written quite a number of history books. I think in other dialogue, I spoke about how it happened that I was covering Kashmir, and I saw the exodus of the Kashmiri Hindus, and I started studying Aurangzeb, and then from Aurangzeb to Shivaji Maharaj, to Maharana Pratap, to Alexander the Great. So much of Indian history that is distorted. So I have written maybe 7 or 8 history books in French. This actually was a French book. I wrote it first for a French audience, and thus I had to make it balanced and not too excessive because the French have a different mentality. But unless the Indian government changes the curriculum of schools and rewrites, at the base, because at the base is that Indian children are taught the wrong history, or they taught no history at all, actually. In my country, France, we are taught very early about our poets, our warriors, our great writers, but it's not so in India. So unless the Indian government rewrites at the base the curriculum for school, starting from, class 5 or 6, up to the universities' curriculums, it will not change. I don't think so. And this is why I started a museum, because I know that book is not the answer. You need to carve in stone and artifact and something that will last longer than the book, which has a limited life. But it's all in the hands of Mr. Modi, actually. He only has the vision, the power, and the will to do that. But it's extremely difficult. It's extremely. We know that people like Murli Manohar Joshi tried, and it raised long time ago, nearly 20 years ago, so much resistance, which is multiplied by 2 or 4 or 5 today, that the Prime Minister must be thinking whether it is worth it at all to rewrite Indian history. But unless he does this, the entire mentality is, because India was a colonized country, so Indians have a colonized mind, except for very few Indians. They have a colonized mind. They have a Nehruvian mind. Nehru, after all, just took up, the British inheritance and clamped it on modern India, independent India. So unless this is done, I think India will remain a country that is not proud of itself, has an intellectual elite that keeps running down its own culture, that is Hindu-phobe, that is India-phobe. Though it is an immense task, extremely difficult, unless it is done, I don't see how India can emerge in the vision of Sri Aurobindo, in the vision of Swami Vivekananda or Sri Ramakrishna, as the great
spiritual nation, which needs at the foundation a great military, economic, mental, intellectual nation. So we can in a kind of catch 22 here. It is extremely difficult to do it. We know that it will arise incredible resistance. I know with my museum that when I do an exhibition on the uh, the Goa Inquisition against, the Christians are offended. I know when I do something on Aurangzeb or the Hindu Holocaust, the Muslims are offended. On Shivaji Maharaj, the Dalits, followers of Shivaji Maharaj are offended. So Mr. Modi must be knowing that it's a very touchy subject, and that's why after 7 years, I don't see after three HRD ministers, Minister of Education and human resources, they haven't done anything. I mean, good people, but they haven't touched upon that. They're on the fringe. They're doing things on the fringe, but the essential, the core of what is to be rewritten Indian history and to be taught correctly to the children and students of India has not happened after three generation of minister under the BJP government. And if the BJP doesn't do it, who will do it? So it's really a difficult situation, but it must be done. It must be done, and books are not enough. Writing, okay, my book is, really entirely new. I mean, I don't think before there has been a history of India that touches upon a wide variety of subject, whether, accusations that have been flouted at India for so long, that India didn't possess the iron knowledge, India didn't have horses for a long time, that Alexander the Great, was very victorious, that the Mughals, the Akbar was the best Mughal emperor, which he was, and he wasn't true. That the independence of Indian movement was done by Mr. Gandhi and Mr. Nehru alone. So all these things I have touched upon, and I have backed it up with solid research, but this is not enough. Only the Indian government can change it at the root, at the base, so that it takes root, and slowly you grow generations of Indian children who know the dark and the good of Indian history and who are rooted in the greatness, because Indian history is about greatness, about great heroines. There's so many great heroines of India which are unknown, except for the Rani of Jhansi, and that not always for the good reason. I don't know, we don't have time to go in here, but what is called the First Indian War of Independence, the Great Mutiny of 1857, actually was not a war of independence. It was a war to put back on the throne the last Mughal king, who was in Delhi. And it was mainly dominated by Muslims, with Hindus blindly following and being misled. I mean, I think Rani of Jhansi was a great heroine, great warrior, but she was misled upon the real reason for that war. So yes, I have rewritten Indian history, but unless the Indian government puts it, down to the level of children as they grow up, as every country does in the world. Every country in the world, try to master nationalism and pride in their children. Unless Indian government does this, it will remain a colonized mind, and we will see again and again, people like Pankaj and Ramachandra Gua and Arundhati Roy, and judges and civil servants, and bureaucrats who have a colonized mind, who are brilliant, talk good English or talk Oxford English, can talk about whiskey or Agatha Christie, but are ignorant about their own greatness, and as a result, look down upon and are not servants of India. Most of the bureaucrats, including the high ones in India, they're not servants of India. They're still servants of the British. They still perpetuate that so-called secularism, so-called that the British try to enforce, often with success. So it's up to Mr. Modi, I think. Okay, that's a very good point made. Of course, there is also a viewpoint that says that the reason that India hasn't gone down that badly is because of the methods of teaching, which are so bad that nobody takes history seriously, whatever is being taught. So that's in the lighter vein. तुफैल जी, मैं अब आपके पास आता हूँ. हम
देख रहे जी, हैं, हाँ जरूर। जैसे फ्रांसवा जी ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, उसके पहले भी पुस्तकें लिखी, म्यूजियम बनाया, सब कुछ लिखा। ये एक व्यक्तिगत प्रयास है, और इस तरह के पिछले ये कहें कि 8-10 साल में बहुत सारे व्यक्तिगत प्रयास हुए हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि हमारे जो इतिहास है उसको सही परिप्रेक्ष्य में लिखा जाना चाहिए, क्या ये व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त हैं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में देना चाहूंगा। पहले मैं इस मूल विषय पर बात करना चाहूंगा, ये जो कि क्या हम अपना इतिहास जानेंगे। एक पुरानी कहावत है कि हर क्रिया के पीछे कारण होता है, और यदि किसी के पीछे कारण नहीं दिखाई दे रहा तो समझिए कि बहुत बड़ा कारण छुपाया जा रहा है। हिस्ट्री यानी जो बीत गया, इसको कलर क्यों करेगा कोई? क्या चीज है जिसके लिए किया जा रहा है? धर्मपाल जी जो मशहूर गांधीवादी हैं, उनका एक कोट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। भारतीय समाज आक्रमणकारियों को परास्त कर उन्हें लौटने को विवश कर देना अथवा समाज के एक अंग के रूप में घुल मिलकर रहने देना तो जानता रहा है, किंतु यदि स्थायी आक्रमण भाव से संपन्न शत्रु लंबे समय तक देश के भीतर जमा टिका रहे और युद्धरत रहे तथा अधिकांश भारतीय समाज को विनष्ट करने और अवशिष्ट समाज को अपने अनुरूप रूपांतरित करने की दीर्घकालीन वैर नीति पर चल रहा हो, तो ऐसे आक्रमणकारी का सामना करने के लिए क्या क्या नीतियां, उपाय और व्यवस्था हो सकती हैं, इस पर शायद भारतीय मनीषा ने अभी तक विचार नहीं किया है। धर्मपाल जी प्रसिद्ध गांधीवादी हैं, इनमें कोई वो आरएसएस बीजेपी नहीं ढूंढी जा सकती। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, और इसके आधार पर किन लोगों ने ऐसा किया, वजह क्या थी उसकी? कैसे दिखेगा? दिखेगा कि संजय जी आपका माइक खुला हुआ है, आपकी आवाज आ रही है, व्यक्तिगत चर्चा। अरे ये तो म्यूट किया। नहीं, म्यूट कर लीजिए जी। मैं एक पुरानी घटना से बात करना चाहूंगा। 2 अक्टूबर 1986 को दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया में रोमिला थापर के नेतृत्व में 12 मार्क्सवादी इतिहासकारों को एक लंबा सामूहिक पत्र छपा था। इसमें सबसे पहले तो अखबार पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया गया, क्योंकि उसने हाल के महीनों में कुतुब मीनार और मथुरा संबंधी 2 रिपोर्टें छापी थी, जिससे इन स्थानों में इस्लामी शासकों द्वारा हिंदू श्रद्धा प्रतीकों व उपासना स्थलों का ध्वंस और अपमान करने की बात सामने आती थी। चाहे ऐसी खोज अनायास ही क्यों ना सामने आए, किंतु वो कितनी ही सुयोग्य संस्था के हाथों क्यों ना हुई हो, उसका समाचार तक छापना सांप्रदायिकता है। ये हमेशा की जानी मानी अपनाई गई मार्क्सवादी टेक्निक है, जिसमें पहला हमला लांछन की शक्ल में होता है ताकि सामने वाला शुरू से ही बचाव की मुद्रा में आ जाए, फिर काम आसान हो जाता है। मार्क्सवादी के तर्क कमजोर भी हों, तथ्य लचर भी हों, तो सामने वाले को मानने की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था हो जाती है, अन्यथा उसे भी सांप्रदायिकता कहा जाता है, जो आमतौर पर हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा लांछन है। जाने माने लेखक, अंग्रेजी लेखक गुरुशरण दास ने लिखा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि वेद, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने वाले को तुरंत इसकी सफाई देनी पड़ती कि वो हिंदू सांप्रदायिक नहीं है। इससे भी ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि किसी आधुनिक को स्वयं ये कहते हुए संकोच होता है कि वो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, जैसे वो कोई अपराध कर रहा हो। ये एक मानसिक वातावरण बनाया गया, और उसका कारण ये है, ऐसा लगातार करने का कारण यह है कि उस वर्ग को कैटर करना है। हम अपना वास्तविक इतिहास जानेंगे, ये चर्चा स्वयं में बता रही है कि स्थिति कितनी भयावह है। इस विचारधारा, इस समूह, इस मानसिकता जो हमें जानने नहीं देता, उस पर विजय पानी होगी। विश्व में केवल 2 स्थान हैं, स्पेन और भारत, जिन्होंने इस समस्या पर का समाधान निकाला है, इस पर विजय प्राप्त की है। किंतु ये समस्या दोनों स्थानों पर आज भी कार्यरत है, इसे ढेर किए बिना काम नहीं बनने वाला। तो ये जो लोग इसे रोकने के चक्कर में हैं, जो इसका साथ दे रहे हैं, उसका कारण मैं एक अमेरिकन अध्येता कल जिसका मैंने जिक्र किया था, इवेत क्लेयर रोसेर ने एक छोटी सी दिलचस्प किताब लिखी है। इसमें मैं भारत के कुछ बचे हुए टुकड़े जो पाकिस्तान की शक्ल में है, उसके इतिहास पर बात करना चाह रहा हूं।
उनकी पुस्तक इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, ये 2003 में छपी है, में पाकिस्तानी राष्ट्रवाद और इस्लामी अंधविश्वास के अंतर्विरोधों का बड़ा रोचक चित्रण है। वहां एक और तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के निर्माण को उचित ठहराने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रवाद को हर तरीके से उभारा जाता है। इसके लिए सिंधियों, बलूचों के संपूर्ण इतिहास को पूरा नकारा जाता है ताकि वो केवल खुद को पाकिस्तानी समझें। दूसरी तरफ इस्लामी विश्वास के अनुरूप राष्ट्रवाद की धारणा को नकारा भी जाता है ताकि पाकिस्तान को विश्व इस्लामी समुदाय उम्मा का अभिन्न अंग बताया जाए। पाकिस्तान का जन्म 1947 में नहीं लिखा जाता, वो पैगंबर मोहम्मद के जन्म से जोड़ा जाता है। इसलिए बीच की सारी सदियां इतिहास से उड़ा दी गई। केवल बीच बीच की वो घटनाएं उठाई जाती हैं जिनसे पाकिस्तान संबंधी विचार का पक्ष पोषण हो सके। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा महत्वहीन काफिर सभ्यताएं थी, इसलिए इनका मिट जाना आवश्यक था। इनकी कोई जिक्र नहीं है। सीधे 12वीं शताब्दी आती है, फिर 16वीं शताब्दी, जैसे बीच का कोई पीरियड हुआ ही नहीं। 712 में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का पहला इस्लामी आक्रमण, 1025 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ का विध्वंस, 1192 में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज को हराना, 1526 में बाबर द्वारा भारत में मुगल खोज की वंश की स्थापना, 1658 से 1707 में औरंगजेब के काल में इस्लाम और हिंदुओं का संघर्ष, 1782 से 1799 के बीच टीपू सुल्तान की अंग्रेजों पर जीत, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत, फिर शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद खां, इकबाल से होते हुए 1940 और मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसा मनगढ़ंत और झूठा इतिहास बनाने के लिए जो कसरत करनी पड़ती है, इसके कई किस्से उस किताब में हैं। सिंध के हिंदू राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम की जीत को खूब प्रभावशाली बताने के लिए दाहिर को क्रूर और कासिम को लोकप्रिय दिखाने के लिए झूठ गढ़े गए। लेकिन रोसेर के अनुसार पाकिस्तान के सिंधी लोग असली इतिहास जानते हैं। उन्हें सिंधियों ने ही बताया कि वास्तव में राजा दाहिर पूरे इलाके में बेहद लोकप्रिय थे, जबकि कासिम ने जीत के बाद 18 वर्ष से ऊपर के सभी सिंधी पुरुषों का गला काट दिया था। हजारों सिंधी स्त्रियों को अरब के अवैसित शासकों के हरम में भिजवाया था। आज भी लोग सिंधी लोग नरम स्वभाव के, चूंकि उनका रक्त बौद्धों से मिलता है। ये पूरा जब इतिहास को हम कलर करते हैं तो उसका कारण है कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है। इस पॉलिटिकल एजेंडा की डिफीट किए बिना, इसको ढेर किए बिना कैसे बात बन सकती है? तो जो भी ये काम करेगा, संजय दीक्षित जी, मैं और हम सारे लोग जो काम कर रहे हैं, इसकी अंतिम जो परिणति है, इसकी जो पॉलिटिकल फसल है, वो जिसके पल्ले पड़ेगी, जो काटेगा, उसको इस काम को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा उसका या हम सबका किया काम मट्टी में मिल जाएगा। तो ये व्यक्तिगत काम बहुत महत्वपूर्ण है। किताबें आ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जैसे सीताराम गोयल जी, रामस्वरूप जी, इनकी किताबें आई हैं। गोयल जी की किताब है हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, इस्लामिक एविडेंसेस, 2 खंडों में है। ये किताब कोर्स में नहीं है। व्यक्तिगत रूप से ये किताब कितनी बिक सकती है? 500, 1000, 2000, 3000 कॉपी। एनसीआर में या भारत भर में उसकी 3-4, 5,000 कॉपियां 2-3 साल में बिक सकती हैं। मगर उस बीच में भारत भर से दसों लाख लड़के तैयार हो जाएंगे। जो औरंगजेब मंदिरों की मरम्मत कराता था, उसने मंदिरों के लिए जमीनें दी। अकबर महान शासक था, शाहजहां ऐसा था, बाबर ऐसा था, ये पढ़ के बड़े होंगे। इन किताबों को पढ़ने वाले 5,000 होंगे और इस झूठे इतिहास को पढ़ने वाले 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख होंगे। तो राजनीतिक हस्तक्षेप अनिवार्य है, और वो किसी के पक्ष में मत कीजिए। इसके तथ्य उपलब्ध हैं। इन तथ्यों के केवल इनको स्वीकार कर लीजिए और इसके लिए कोई समिति बनाकर इनकी छान फटक कर लीजिए। और इसका ध्यान कीजिए, इतिहास बदलने के लिए नहीं होता, इतिहास कलर करने के लिए नहीं होता। जो तथ्य है वो सामने है, जैसा है वैसा ही तथ्य लिया जाए और उसके बाद उसको स्वीकार किया जाए। उसके कारण से वहां वोट खराब हो जाएंगे, हम वो सीट हार जाएंगे, फलाना हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं की जा सकती। राष्ट्र अपने दबदबाते हुए, चमकते हुए माथे के साथ उठेगा, तो इसको उठाने के लिए आपकी आहुतियां, आपकी तेजस्विता आवश्यक है। आप इसमें ढीले नहीं पड़ सकते। और व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है, मगर उसे लेजिटिमेट करना, उसे अधिकृत करना, ये तो राजसत्ता ही करेगी।
यह अनिवार्य है। धन्यवाद तुफैल जी आपके इस आरंभिक वक्तव्य के लिए। So let us look at this, Francois, and we are all agreed, both you and Tufail ji, both of them agree that the intervention of the state is critical. Now we have the new education policy coming. I think you have looked at that also. And one of the points that is there in the new education policy is rewriting of the textbooks. There is also this point about uh, using the teaching medium. Of course, that's a different debate, whether only changing the medium at the elementary level is going to solve the problem, or you need to go the whole hog, but that's a different debate. Can we formulate an action plan by which we can influence the rewriting of the textbooks in the right perspective? Right means not the capital R, but small r, just the right perspective, that is in a neutral way. We are not asking that things be glorified and things be, there should be a complete U-turn, but only that the biases, the prejudices that have filtered into, that have infiltrated into our textbooks be removed and the history be told to us as it is. What do you think it'll take us to influence or pressurize the government to have these textbooks written in the correct way? I did meet twice recently the HRD minister, now the education minister, Mr. Ramesh Pokhriyal, and we spoke about the NCRT. There's a panel form, for the NCRT business, and I proposed my services, and I think there are others who are on the board already or who have been sought out to be on that board. But I think even if he's good willing, the minister's hands are tied in his bureaucracy, and the bureaucrats they're going to bury this. One has to bypass. The problem is, even if there's a political will on the part of the BJP, they have to bypass the bureaucracy, because the bureaucracy is going to stifle the whole issue. I mean, we have seen how some of Mr. Modi's good policies, good edicts have died down the way, when they come down to the roots. I mean, I shuttle between Delhi, Pune, and Pondicherry, and I can see when by the time it reaches halfway, it's already so diluted, and the bureaucracy is the king or queen of India. So it's not only the political will, it's that the bureaucrat. There are so many committees which have been formed for the NCRT. I think there is a will at the moment of the government, backed by Mr. Modi, because Mr. Modi is the ultimate boss, and his ministers do his bidding, and I think he keeps a tight leash on them. Now, there is a will at the moment, but there are so many committees which are headed by bureaucrats. I do know, the Secretary of Education, and he doesn't have the frame of mind, he doesn't have the inclination, he doesn't have the knowledge, doesn't have the will. I would say probably has an ill will toward this kind of thing. So how to bypass the bureaucracy, not only for education, but for everything? The Congress has, in so many years, decades of powers, has created a system of which the BJP is a prisoner today. Oh, even Mr. Modi in Delhi, in his residence, of Racecourse Road, he gives an order. He's in the hand of his bureaucrats. So maybe the higher bureaucrats, they all have the same mold, in my opinion. They're nice. You meet the higher bureaucrats around Mr. Modi. They're refined people. He chose them, but I think they're of the same mold. They don't understand, with the best will in the world,
They don't understand what he wants to do. They don't understand the need to rewrite Indian history. They think it's fine as it is. I don't know. I mean, maybe you know, Sanjay, bureaucrats of that level, of the, secretary level, uh, who are, inclined like we are, who have that, Hinduness, Indianness inclination. I personally don't know. I know nice bureaucrats. I met Mr. Modi's, top bureaucrats. Mr. Nipanda Mishra, when he was Mr. Modi's principal secretary, was a remarkable man, extremely intelligent, extremely powerful, extremely efficient, and a good person. And I had a very good rapport with him. But I doubt he would understand the need to rewrite Indian history. So it is not only the political will. So the will of the people, maybe you're right, the will of the people, but we come back to the social media and we see that it's the right direction. The social media, Indian social media today goes in the right direction, but it doesn't have the impact of the mainstream media. There is in the social media an inclination and aspiration to rewrite Indian history. There is an inclination to go down against people like Tipu Sultan, and the truth has come out about Tipu Sultan. I have an exhibition in my museum about Tipu Sultan. But unless the bureaucracy, understand that Tipu Sultan was a tyrant, it's not a question of Hindu versus Muslims. He was a dictator. He was a bloody dictator. He was the Hitler of his time. So unless the bureaucracy understands it, so you have to catch the mainstream media. You have to tame the mainstream media. That the mainstream media puts pressure on the prime minister, on his ministers, to reform the education system. As we see, the social media, both in India and in the West, has put so much pressure on the heads of government, to come down hard on COVID-19, to put people in confinement, soon they're going to impose the vaccination all over the world. You will not be able to fly, you will not be able to go to another country without that vaccination. It's going to come for sure. So, but the mainstream media has, put that pressure on government, and the government have fallen prey to it. I mean, even my president, Mr. Macron, is a prey to the mainstream media, who keeps, throwing, numbers of 250,000 people have died, and this guy, Tedros, has said that it's only second wave. So there's a pressure on governments, to including on Mr. Modi. So we need to conquer the mainstream media if you want to change the education system in India. The political will is not enough, because the bureaucracy is against it, consciously or unconsciously. Now, unless the mainstream media put pressure, like they have done a little bit, towards Pakistan, there has been, I remember when I was covering Kashmir, that most of the mainstream media was against the Indian government, was saying that, Pakistan is not sponsoring terrorism in Kashmir. Pakistan is not, sheltering militants that they throw back in India after having trained them and armed them. They were the Indian media and the Western media, led by Mark Tully. So there was pressure on the government. Now, if the same media, can put pressure on the government, saying, Tipu Sultan was a monster, Aurangzeb was a monster, there is no need to put in the comments, his own edicts kept in archives and government, museums says so. The Sri Aurobindo was, and Tilak were the first great leaders. They initiated the independence movement. Their role is tremendous and has been underlooked. So unless there's pressure from the mainstream media, again, political will is not enough. It's not enough. You need to bypass this bureaucracy, which is so enormous, and India is lost in a maze of committees and subcommittees and subcommittees, including on education. You create too many committees. It kills anything. It kills anything. It just stratifies it in bureaucracy and words, and in the mind. It stays in the mind. When the mind is good, but you need to translate the idea in the mind into action. And the bureaucracy will never allow that. That's my personal opinion. Okay, you are quite frustrated with bureaucracy, and okay, I can understand.
having spent 35 years in bureaucracy, I know this very well. And to tackle bureaucracy, you actually need bureaucrats only. That is the No, I beauty of this know that. situation. I insist So, that the bureaucracy is a legacy of the Congress. Not only the bureaucracy, but the whole VVIP system that I see every time I go to Delhi. Mr. Modi and his ministers are prisoners of that system. A system where you're a minister. First, you live in a palatial house, in Tughlaq Lane, or some of these very prestigious places. Secondly, you are surrounded by levies, of bureaucrats, of servants, of PAs, of PS, which gives you little access to the people. Little access to the people. And then, if you are Mr. Modi, you have another 7 rings of security around you, which is both justified and unjustified, and then that cuts you more from the people, and you are in the hands of your bureaucrats. If you want to implement things, you have to go a long chain. But you know that better than me, from the first secretary in your ministry down to the small guy, in Tamil Nadu who's going to kill your reform. So the BJP is a prisoner of the system created by the Congress, which is the bureaucracy and the VVIP system. And unless Mr. Modi breaks the shackles, he will not be able to do anything, including the education reform, in my opinion. Again, my opinion. okay, no, yes, it's an unpopular opinion, but I think a pretty valid one. I would tend to go with it. तुफैल जी, आपने सुना राष्ट्र जी क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया बात जी, अब आप क्या कहते हैं? जी, मैं एक तो ये जो सिक्योरिटी के 7 चक्रा, इस पर भी बात करना चाहता हूं। जिस ग्रुप को कैटर करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं, इसी से इसकी सिक्योरिटी की शुरुआत हुई थी। इजराइल के खिलाड़ी म्यूनिख में मारे गए थे, उसके बाद सारे विश्व में सिक्योरिटी की थ्रेट और इसके ये सारे काम शुरू हुए थे। उससे पहले हवाई अड्डे पे कोई चला जाओ, कोई निकल आओ, कोई बवाल नहीं था। ये जिस समस्या से डील करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसी का चरण वो भी है, जिसकी वजह से हम सबको अपनी सुरक्षा के प्रति चौकन्ना रहना पड़ता है। मैं विषय पर आता हूं। मैं एक इतिहास में घोलमाल जो किया गया उस पर थोड़ी सी बात और करना चाहता हूं। मेरे एक अपनी निजी घटना से बात शुरू करता हूं। मेरे एक मित्र हैं, उनके परिवार को मैंने डिनर पे बुलाया, पास में रहते हैं वो, और वर्ग के नाते बताना उपयुक्त होगा, वो जाटव हैं और उन्होंने अपने आप को नव बौद्ध घोषित किया हुआ है। तो ड्राइंग रूम में बुद्ध की मूर्ति लगी हुई थी, उसे देख के बड़े प्रसन्न हुए। 2 मिनट की बात के बाद वो पुष्यमित्र शुंग का प्रसंग निकाल लाए और उसके बाद बौद्धों के नाश के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराने लगे। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने उनसे पूछा कि तुर्की जो बौद्ध कंट्री है था, उसमें ब्राह्मण गए थे मारने? जो मध्य एशिया है, इसके सारे क्षेत्रों को बौद्धों को ब्राह्मणों ने मारा था। आज जिस चीन जिस समस्या से जूझ रहा है, वो सारा का सारा क्षेत्र बौद्ध था। इवन आज भी तुर्कों की एक क्लान तानातुआ कहलाती है, जो रशिया का बाइकाल लेक का इलाका है, वहां पर आज भी हैं और बौद्ध हैं, ये तुर्क हैं। ये पूरा क्षेत्र, पूरा इतिहास नष्ट करके, जैसे अफगानिस्तान में ब्राह्मणों ने बौद्धों को नष्ट किया और उसके बाद में मुसलमानों को बसाने के लिए बुलाया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मगर जहर इतना गहरे उतरा हुआ है। समाज टूट जाए, राष्ट्र एक ना हो, इसके लिए लगातार कार्य होता रहा है। मगर इसमें आप जो ये बात कह रहे थे व्यक्तिगत स्तर पर, इस पर भी काम हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स को प्रेशराइज करने के लिए, राजनीतिक दलों को प्रेशराइज करने के लिए भी एक तरीका और भी टूल है, जिसकी भाजपा सुनती है। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, संघ के एक पुराने प्रचारक थे, आरएसएस की बात कर रहा हूं, बाबा साहब आपटे। उनके नाम से एक बाबा साहब आपटे स्मारक समिति बनी, जिसे बाद में मोरोपंत पिंगले जी ने संभाला। ये भी आरएसएस के प्रचारक थे और उन्होंने इतिहास संकलन योजना की शुरुआत की है और उसका आधार ये बनाया है कि प्रत्येक जिले में उनकी इकाई होगी और हर जिले में अपना इतिहास वो इकाई लिखेगी। सरस्वती की खोज को लेकर ये लोग सक्रिय थे और इन्होंने आदि बद्री से, गुजरात के पास जो सिंधु में वो सरस्वती समाहित होती थी, उसका पूरा रूट खोजा। आज भी उसके अंतर धाराएं हैं, वहां पानी है, ये सारी चीजें निकाली। वाकड़कर जी उनके प्रचारक थे।
जिन्होंने भोपाल के पास वो पुरानी जो गुफा चित्र हैं उनको ढूंढ निकाला था, ये भी उनके लोग थे। ये लगातार काम कर रहे हैं, मगर इनका एक सामाजिक दबाव जितना होना चाहिए, काम चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। इतिहास संकलन योजना लगातार काम कर रही है, इसकी बैठकें भी हो रही हैं, ये पत्र भी निकाल रहे हैं, मगर इनको लेजिटिमेट तो राज सत्ता ही करेगी। इसके लिए हमें टूल डेवलप करने होंगे, और सौभाग्य से एक टूल, जो अभी 2 दिन पहले की बहस में शारदा जी कह रहे थे कि इसने यूं किया और उसने यूं किया, बेसिकली हमारी आवाज सुनने लगे लोग, उसका कारण यह है कि सोशल मीडिया आ गया। हमें मेन मीडिया के अलावा एक जरिया मिल गया अपनी बात करने का। उसका नतीजा है कि विश्व भर में राष्ट्रवादियों की हिलोर आ गई है। तो ये प्रेशर और अधिक बढ़े, जितना भी अधिक हो सकता है, और इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण दिखाई दे, तो ये काम निश्चित रूप से हो सकता है। इसको काम व्यक्तिगत रूप से, अब गोतिया जी की किताब है, ये किताब कोर्स में इसके तथ्य आ जाएं। कोर्स जो लिखा जाना है, कल आप जो संजय जी बात कह रहे थे कि 2 साल के अंदर किताबें तैयार हो रही हैं, उनमें ये विषय आने चाहिए। टीपू सुल्तान चूंकि अंग्रेजों से लड़ा इसलिए वो देशभक्त था, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? ऐसा राक्षस जिसने इतने मंदिर तोड़े, ऐसा भयानक दुष्ट था, उसके सत्य क्यों नहीं? और ये बात कल आपने बड़ी अच्छी कही जी। टीपू सुल्तान को जिस फौज ने हराया था वो अंग्रेजों की, मराठों की और निजाम की सम्मिलित फौज थी। यही कहना चाह रहा था, मराठे भी सम्मिलित थे उसे। मगर ये है 1857 भी तो ऐसे ही लिखा जाता है, सामने ही तो है कि 1857 के जो बड़े 2 केंद्र हैं वो लखनऊ और दिल्ली हैं। बाकी छोटे छोटे रजवाड़ों के झगड़े हैं, सेनाओं का झगड़ा है, गौर, ये बात भी मैं इस एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म में इसमें जिक्र करता चलूं। धर्मपाल जी की किताब है काफी मोटी, और वो गांधीवादी हैं, कि भारत में कहां कहां बूचरीज थी। बूचर कसाई मुसलमान होते थे, बूचरी के मालिक अंग्रेज थे, सारे भारत में थी, क्योंकि अंग्रेजों को बेल्ट के लिए, होल्स्टर के लिए चमड़ा चाहिए था। जो ब्राह्मणी काऊ है, सफेद चमड़े वाली गाय, इसका चमड़ा चाहिए था, इससे चर्बी मिलती थी। सुअर कौन खाता है? केवल एक वर्ग भारत में, वाल्मीकि। उनकी क्या उस समय क्षमता थी कि उनके लिए पिगरी बनती? 1857 में सुअर और गाय की चर्बी बता दी गई। सुअर की चर्बी का कोई उल्लेख कहीं नहीं है, सब अनैतिहासिक है, सारा झूठ है। जो सैनिक बिदके थे वो हिंदू सैनिक बिदके थे, ब्राह्मण थे वो, जिसको पांडी म्यूटनी कहा है अंग्रेजों ने, उसमें भी चर्बी मिला दी इन कमबख्तों ने, सुअर की चर्बी मिला दी जिसका अस्तित्व नहीं था। सुअर की पिगरी की को प्रोडक्शन होता किसके लिए? लेता कौन, खाता कौन उसे? कुछ नहीं है, मगर सब सिरे से झूठ बोल दिया गया है। तो 1857 में जो दिल्ली और लखनऊ है, ये अंग्रेज हार जाएंगे तो ये सत्ता किसके हाथ आएगी? दिल्ली की सत्ता ध्वस्त करने के लिए, जैसे लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, लोग कह देते हैं ग्वालियर के लिए, ग्वालियर मराठों की चौकी है, जिसका कारण उत्तर भारत में मुगलों को स्थापित नहीं होने देना है। महाजी सिंधिया ने मुगल बादशाह को औरतों के कपड़े पहनाकर उसके दरबार में नचवाया था। ये अंग्रेजों का साथ क्यों नहीं देंगे और ये मुगलों के साथ क्यों मिल जाएंगे? कोई कारण ही नहीं है। ये जो मूल प्रश्न है कि राष्ट्र कौन है, किसका है, इन पर तो विचार करो। जो चली आ रही है धारा वही चलती आएगी। ये तो सामान्य बातें हैं, सामने की चीजें हैं। तो इसका जो एक सामाजिक दबाव बनना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के कारण बनने लगा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब बवाल होने लगा है, लोग सवाल पूछने लगे हैं। तो इसका एक दबाव बनता जाए, निश्चित रूप से काम आएगा। और जो व्यक्तिगत काम कर रहे हैं लोग, बिल्कुल अपने निजी साधनों से जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी चीजों को महत्व दिया जाए, उनको कोर्स में ले लिया जाए, छान फटक के पूरी चलनी लगाकर। ऐसा नहीं है कि वो चूंकि कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हमारे हित की बात हो या हमारे विपरीत हो, इस सोच से नहीं, तथ्यात्मक बात हो, जो सच है वो सामने आए, और वो सामने आएगा तो उसका परिणाम निश्चित रूप से राष्ट्र के विकास में आएगा। राष्ट्रवाद विकसित होगा। राष्ट्र एक मूलतः आर्थिक सत्ता है, उसके लाभ सब तक पहुंचते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मोदी जी की सरकार बनेगी, वो हम सब तक पहुंचेंगे। तो इसके कार्य के लिए हम सबको जूझना चाहिए और अभी यही माध्यम है। आप बिल्कुल 1857 के बारे में जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो हमें पता है। और मैं तो बार बार हमारे जावेद अख्तर साहब को छेड़ता रहता हूँ ना कि उनके बाबा साहब के छेड़ना। बाबा साहब, उनके दादा के दादा, जी 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 या उनके परदादा के पिताजी जी। वही तो थे हमारे, क्या नाम है उनका, फजले हक खैर मौलवी। अहमदी मौलवी, जिन्होंने जाके वहां पे जिहाद का फतवा दिया था। और वो तो जिहाद लड़ रहे थे। सीधी सी बात है, आपने जैसा ग्वालियर का आपने उदाहरण दिया, जो सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया उसका मूल कारण ही यही था। और उनको ये कह दिया जाता है कि साहब कि लोग आपस में, इनमें एका नहीं था, ये अलग अलग हो गए। तो ये सिख जो थे वो जिहाद का साथ कैसे दे सकते थे, ये एक मूल प्रश्न है जिसके ऊपर कोई सोचता नहीं है। वही वाली बात है कि पूरी की पूरी, पूरा का पूरा जो इतिहास है उसको ही दूषित करके और हमारे मत्थे मढ़ दिया गया है। ये तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भी ये जो तथ्य हैं ये वो 50 साल के बाद अन्वेषण करना आरंभ किया, तब ये पता चला, वरना तो हम तो वही पढ़ के आए थे और उसी को पढ़ के 10वीं पास की थी। उसके बाद हमारा इतिहास से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि हम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में चले गए। वैसे एक ये भी तथ्य है कि ये जो भारत में इंजीनियरिंग और मेडिसिन का जो एक ऑब्सेशन है, उसकी वजह से भी हम बचे हुए हैं कि बच्चे जो हैं वो रटा रटा इतिहास पढ़ देते हैं 8वीं तक, उसके बाद फिर इतिहास के बारे में चिंता करते हैं, भूल भाल जाते हैं उसके बाद, और थोड़ा बहुत जो अंश है वो रह जाता है। I think we have deliberated on this question, and I give you your one more round we can have, because there are not many questions, so we can have one more round and deliberate on strategy. Let's do the strategy making round. And that strategy may involve a few tactics. That is something that we can discuss. Short 3-minute, 4-minute strategy making round. So, you have to bring in a few people who have the knowledge and the will to, the knowledge first, and the will to change Indian history. So the government, instead of creating committees after committees of bureaucrats, should bring outside people, non-government. And I know in India there are quite a few. There are people like Michel Danino, who's also a Frenchman, who's an expert, on the Saraswati River. He's an expert on the Aryan invasion. He's a very, very, well esteemed professor, I think, in Ahmedabad University. There are experts. You need to also rewrite the whole independence movement. So there are 2-3 experts that I know in India who can be brought in by the government. So I would say, non-political, non-BJP historians or people who are really know the subject and biased. So bring these people, and like the Israelis did. The Israelis when they got their independence, they formed committees. There was one committee to simplify the Hebrew language. There was a Yiddish, and it was a gibberish language. So they wanted the ancient Jewish language Hebrew to be modernized, which India should have done for Sanskrit, but never bothered to do. And then they brought another few people, to write the history, of the Jewish people from the time before Jesus Christ till today. So in the same way, the Indian government can do that. That means trusting and I don't think Mr. Modi is ready to do that at the moment. And I have proposed it to him that, sir, every month I will bring you experts in their own field who are non-political, non-BJP, and they will give you a different sound. They will give you a different input than the one you get from bureaucrats. Because you're in Delhi, you're far away. You don't get to listen to what the people want, what the people say. But I know that he said no because
Mr. Nipana Mishra told me, yes, we put your proposal to Mr. Modi, and he said no. So he has to do it for education. He has to bring people, like Michel Danino, and there's another Frenchman, Claude Harpy, who is expert on Tibet. You need to rewrite also the whole episode about Indo-Chinese relationship from the time of Indian independence and Chinese independence in 1948, because this also is totally false. So bring these people, put them in a room, put them in one of these nice cottages in Delhi, Bangalore, and lock them, and in 2-3 weeks time they can come up with a policy for different aspects of Indian history, and then you can give it to the bureaucrats, with a diktat that they should transform it into curriculum for different schools. That is my idea, and I have told 3 different HRD ministers, and they all said yes, but nothing happened. तुफैल जी, रणनीति के ऊपर 3 मिनट। आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, आप म्यूट है जी। विश्व भर का इतिहास कोई भारतीय का नहीं रगड़ा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, उसके मूल पर जाना चाहूंगा। कबीर की 5 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। दीन के काजे अल्लाह पठाया, ले फरमान मोहम्मद आया, तिन फिर दूसरी राह चलाई, देरा फोर मस्जिद उड़वाया, हिंदू पर जजिया फरमाया। ये कबीर हैं, ऑथेंटिक हैं। एक बहुत मशहूर नज्म इकबाल की है, 2 नज्में हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। शिकवा मुसलमानों की तरफ से अल्लाह से शिकवा है, जवाब शिकवा अल्लाह ने जवाब दिया है। इस नज्म की 3-4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। तू ही कह दे, ये खुदा से मुसलमान बात कर रहे हैं, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदावंद के पैकर किसने, काट के रख दिए कफ्फार के लश्कर किसने, काफिरों की सेनाएं किसने काट के डाली, किसने ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, ईरान का पारसियों का जो आतिश कदा था जहां वो अग्नि पूजा करते थे उसको किसने ठंडा किया, किसने फिर जिंदा किया तस्कराए यज़दा को, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाह अहद कहते थे। इस समस्या से निपटना है। ये जो इतिहास झूठा लिखा जा रहा है और हम सच इतिहास लिखेंगे किसके लिए, राष्ट्र के लिए, और किसको रद्द करेंगे, इस विचारधारा की बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना ही चाहिए और इसमें कुछ करने की जरूरत है। उनकी किताबें जो उन्होंने लिखा है, इकबाल का शिकवा पढ़वा दीजिए और ईमानदारी से कलर मत कीजिए, जैसा उसने लिखा है, जैसे अर्थ है वैसे। ये कोर्स में आ जाए, लोगों को खुद पता लग जाएगा कि क्या करते रहे, ये कौन सी मानसिकता जो करती है। आप जयपुर में रहते हैं, अभी पिछले वर्ष जयपुर में छोटे से झगड़े पर 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया, यानी पुलिस के ऊपर लोग चढ़ बैठे। ऐसा कैसे हो गया? वो मानसिकता क्या थी जो काफिरों के पीछे भाग रही थी? क्यों कश्मीर से गैर मुस्लिम्स को क्यों निकाला गया? अब इसको वहां से पंडित निकाल दिए गए, नहीं, वहां से हिंदू निकाले गए। किस मानसिकता ने निकाले? सच तो बोलिए, छिपाकर क्या होगा? फ्रांस का एक प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो ताल ठोक रहा है, जिसकी जो मर्जी है उसके खिलाफ वो बोल रहा है। ये हम क्यों नहीं कर सकते? जब तक इस विचारधारा को बिल्कुल इसका खुलासा नहीं करेंगे, इसको ईमानदारी से साफ नहीं लाएंगे, बात नहीं बनने वाली। ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये राष्ट्र के जीवन मरण का प्रश्न है। इसको सही से डील न करने का नतीजा पाकिस्तान है। भारत के आगे की रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं, आगे की रणनीति के बारे में। इसकी रणनीति पर ही कह रहा हूं कि इस विचारधारा को जिसके कारण ये सब किया जा रहा है, ये झूठ बोला गया, उसको एक्सपोज कीजिए। उसमें भी बहुत बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि हम फंसे हुए हैं, बाहर आए, उसको स्वीकार कीजिए, इस संख्या को कम कीजिए, वोट बल कम होगा, धीरे धीरे सब निपट जाएगा। मूल समस्या का समाधान ये है। जी, मैं अब पहले मैं अपने दर्शकों से आग्रह कर दूं कि आप कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। इस पर आप इसका बेल आइकॉन दबाएं। साथ में मैं अपने जो स्पॉन्सर हैं, ये एक स्पॉन्सर्ड सेशन है, इस सेशन के स्पॉन्सर
श्रीमणि और कृष्णा भगवान गंदम को धन्यवाद देना चाहूँगा. I would like to thank Srimani and Krishna Bhagwan Gandham for sponsoring this session. And now we go to the question and answer session. We got 4 questions that we will take one by one. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Okay, first question. The hidden enemies are rich Western benefactors sitting behind leftist agenda peddlers who have given them lifelong employment by sponsoring their work. How does one go after this hidden enemy? Francois. So the hidden enemy is not so much hidden. My first thought is towards the Western Indologists who actually have a kind of monopoly on the way Indian history is told both abroad and in India. In my country, France, there's a gentleman called Christophe Jaffrelot. He's the head of the Indologist in France. He's actually sponsored by the French government, which sponsors him and other sections to enlighten the French people about India. Now this Christophe Jaffrelot he's been an enemy of India. He's been an Hinduphobe. He's made his lifelong task to demonize Hindus and demonize me also because I know I'm a defender of Hindus. In America, you have Witzel, you have this Truckshare, you have so many of them in every Western country. There are Indologists who are enemies of India. And these Indologists have a lot of sway because they're invited in India. For instance, Christophe Jaffrelot is a board member of the Ashoka University. And actually, when we met, my wife and I, the HRD minister, we told him he was not aware of it, that Christophe Jaffrelot, an enemy of India, a respected historian and Indologist, is actually a board member of one of the prestigious universities of India. So what we need to do is breed another generation of Western Indologists who are rooted into Indianness. So they have to be brought to India, a younger generation, brought to places like Benares, taught a little bit about Sanskrit, about temples, about pujas, about Indian history, real Indian history, and then send back to their countries where, they will grow up in stature and eventually, have a say into a government because these Indologists are very influential. The Indian government, the business community in France is influenced by these people who say, India is a land of caste, is a land of, Brahmins exploiting Dalits, a land of Hindus, martyrizing the Muslim minority. At the time of Article 370, they were very active, and in France, there's a very bad perception about the removal of Article 370. So, these are enemies. I mean, the enemies are also in India, of course, the newspapers, the intellectuals, but they can be dealt because they're a minority. But these people, they are the real enemies. Okay, so next question. LKS, very important for Hindu survival. Vinay ji, contemporary इतिहास 8वीं वाला पाठ पढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि जनमानस इससे जल्दी रिलेट करेगा. प्लीज सजेस्ट. आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये होगा कैसे? अरुण शौरी साहब की किताब एमिनेंट हिस्टोरियंस, जिनमें इनकी करतूतों का खुलासा, ये सारे के सारे राक्षस, उनके नाम ले लेके उनकी करतूतें, उन्होंने किस किस तरह से फंड के गबन किए, मिनिस्ट्री से पैसे खाए, क्या क्या किया, 10-10, 12-12, 13-13 साल तक पीएचडी के नाम पे पैसे लेके बैठे रहे, वो सब उन्होंने खुलासा किया. मगर प्रजातंत्र में अंतिम शक्ति तो सिस्टम है. वो जब तक उसको लेजिटिमेट नहीं करेगा, होगा कैसे? ये कोर्स में किताब आनी चाहिए. बातें ठीक है, मगर करेगा कौन? एक व्यक्ति करना चाहे तो कितना फैल सकेगा? तो कुल मिलाकर सिस्टम में अंदर ही लेना पड़ता है इन चीजों को, तभी कुछ हो पाता है. जी, गणेश जी पूछ रहे हैं, मोदी सीम्स टू बी रिलक्टेंट ऑन एनसीईआरटी एंड राम सेतु. He seems to have a tight hold on ministers and Babus have tight hold on him. How to pressurize government?
Francois, that's what we've been talking about. Anything more Yeah. to suggest? Would you like to say something on this question? Yeah, I'm going to say something. I think, India is a land of wisdom, and there are so many great seers and avatars and, gurus and simple sadhus who have said so many wonderful things. So if someone could uh, draw the gist of some of the sayings of Swami Vivekananda or Sri Aurobindo. Sri Aurobindo said so much, and 100 years ago, he predicted what would happen in Kashmir. When Nehru started, taking power, he predicted, what would happen to India, the bureaucratization, the Gandhism, the non-violence, the blindness, the education. So if one could compile some of his great sayings, and offer it to Mr. Modi as a kind of Bible of, you know, uh, road map of what is to be done. It is all there. I mean, it's all there. It's all been said, by so many great saints. You just need someone to compile it, in a logical, maybe chapter by chapter or subject by subject, and give it to Mr. Modi, who's very, very respectful, who has respect for Sri Aurobindo, for Swami Vivekananda, for all these people. So give it to him because it's all there. We need not invent anything. It's all said. Whatever I say, I have read Sri Aurobindo, and I have gathered my knowledge. He's written a book called The Foundations of Indian Culture. Everything has been said there. It's written 100 years ago in response to an English journalist, Mr. Archer, who started denigrating everything Indian, sculptures, literature, poetry, everything. So Sri Aurobindo wrote a book that what is Indian culture? The foundation of sculpture, the foundation of architecture, the foundation of painting. The true. And today it's still absolutely relevant. So we need not go look for answers in the West or with some intellectual. We have them here. We need to give them to the Prime Minister because he has respect for it. And it may enlighten him. Okay, Nilesh, views on true Indology being shown on exit doors by Twitter. I don't think that is the subject here, so I'll pass it over. Any more questions? Pratik Pandya, what is the motive of leftists to distort our history? And why this government is scared to correct it? Why government couldn't find real history writer? तो फैल जी कुछ कहेंगे इसके बारे में? पांड्या जी, मैंने तो यही बात कही है, इसी विचारधारा के कारण, जिसके कारण ये हुआ है। दोनों तीनों सत्रों में जो मैंने अपनी बात कही, वो यही तो कही है कि ये सारा का सारा कुकर्म हुआ ही इसलिए है कि अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए, विदेशियों को लेजिटिमेट करने के लिए भारत को उसकी जड़ों से उखाड़ दो। और ये जिस विचारधारा के कारण हुआ है वो इस्लाम है, उसके बारे में भी लगातार बात कर रहे हैं, हम सभी बात कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट इसको ठीक करेगी तो तभी करेगी कि उसको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि शत्रु कौन है। लीपापोती से काम नहीं होने वाला ये, और मुझे लगता है कि ये काम होगा, इस बार ये काम होगा, हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं। जी, महादेवन जी पूछ रहे हैं, often I have observed that it is the Brahmins who are made to feel guilty of crimes they have not done. These people are always deriding Hinduism, never any other religion. Your take on this, sir. Okay, Francois, you can go for this. No, I have defended the Brahmins actually because, again, I was aware that my French Indologist put a lot of blame on the Brahmins. Once I was on a TV literary show in France because I had written a book on Indian history, and so I was invited, and there was 2 or 3 Indologists, and one of them said, on TV with a viewership of maybe 2-3 million people say, "Oh, Brahmins are all spies." So I have defended the Brahmins, and I have recognized their role, and I saw them in Kashmir when they were, hounded out of their ancestral land. So I have a lot of sympathy for Brahmins. I know that today they are actually the Dalits of India. Many of them are all the priests, are badly paid, and many of them are coolies or cooks, and they even in Delhi, I think the
the whole Sulab system is cleaned by Brahmins. So, but I don't know if it's very relevant today, because we need to have a united India. We need to go beyond caste. So we need to unite the Indian nation, Brahmin and Dalit together. Hindus have to come together, from the Brahmins to the, they need to come together, because they are a very important bloc. I mean, still in India, they are the majority. They're 750 million in the world. I don't know, 1.2 billion in the world, or 1.1 billion. So it's a very important community that is not heard, because they're very divided. And of course, the British divided them, and of course, today other people divide them. But if they would become conscious of their power, of the number power, of the brain power, because most Hindus are educated, and of their money power, because most of the Hindus who have emigrated abroad, they have done very well for themselves, whether it's the UK, US, Canada. So if only they would become conscious of their number, they would have a tremendous impact in the world, including, have a lobby with the government of India, because they're a powerful lobby, like the Jewish lobby is a powerful lobby, with the American government. So in the same way, the Hindu worldwide community, India and outside, could be a very powerful lobby, and could, force Mr. Modi to reform education. Okay, well, that brings us to the end of this episode. And thank you very much to both our panelists. And I also thank the sponsors of the session, Shri Mani and Krishna Bhagwan Kandam. I also thank all the viewers who joined at 3 p.m. during the daytime. It's usually the lowest viewership time, but even then we had nearly 700 people watching, so that's a great kind of response for this session. And of course, let me remind all of you that Francois Gautier's book, An Entirely New History of India, would be released on Jaipur Dialogues at 7:30 p.m. So all of us will be there, and you all are also requested to watch that. And please listen to Francois personally, what that book is all about. And that is basically closely related to this session. So all those who are watching this sessions are requested to be present there at 7:30 p.m. to know exactly what he's talking about. Things about Ashoka, things about the great Indian resistance to Islam, things about Vijayanagar Empire, the kind of things that are not taught in our history, he will be explaining while his book is being released. तुफैल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ हम इस सत्र का अंत करते हैं. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम. वंदे मातरम.